my dear students and friends. So welcome to our RSV Physics Class. So this is lecture 2 on kinetic theory of gas for your basically class 11 NEET JEE and board exams. So this is basically derivation, and after derivation and theoretical expression I will be explaining different types of problem set that will be common for your competitive exams. Okay, so now let us derive the expression for pressure of perfect gas. So आपको perfect gas का pressure जो है ना, आप 1/3 rho c square CRMS square this you have to derive. कैसे derive करेंगे? Okay, so आपको जो है पहले आपका if you are very much strong in theory, then you will be able to face any kinds of problems, है ना? Okay, so let's discuss with the theory. So this is the Cartesian coordinate system, and here this is x-axis, y-axis, and z-axis. So you consider a cube. Okay, so there is a cube. This is cube of length L, and so this is cube of length L, and this is filled with gas. This is length is L and filled with gas, and that gas molecules, you know, the ideal gas, for ideal gas molecules this is incessantly random motion, and collision of gas molecules with the wall of this cube is perfectly elastic. Elastic means kinetic energy is conserved. Okay, so now this is the assumption. Okay, now let's us this kinetic energy is conserved, and let's consider this is the phase, this is the phase, this is your origin, this phase is A, and this opposite phase is dot mark is this B, and this is origin. Okay, now you have to, this is the length of L cube, and it is filled with gas molecule. Okay, now so let's consider a gas molecule just after this B surface, है ना? यहाँ से it is starting from origin, है ना? So it is going towards A surface and collide with A wall elastically, and it is going to another जो है its origin. So in this time how much? So these gas molecules have a molecules have a speed c, and its component in different direction x, y, and z is cx, cy, cz. Now consider in x direction, that I have explained. So from coming from just origin, and it is colliding with, मतलब just after this B surface के साथ उसका collide नहीं हुआ, फिर B surface से जब start किया, start करने के बाद यह A surface में this is collided, and again it is going towards the origin. So in the meantime, this collision, what is the change in momentum? Change in momentum is molecule with mass m, each molecule has mass m, am cx minus, है ना? This direct velocity is changing direction, am c minus x. So total am cx. This is the change in momentum. Now what is the time taken from B surface to A surface and again towards B surface? It is time is taken, this is twice L length, L length आया, L length गया by Cx. So the change in momentum, how much it is? Rate of change, है ना? Rate of change. This is force equal to twice m cx over twice L by cx. Okay, so this is जो है m cx square by L. So this is the expression for force. And pressure, how much it is pressure? Pressure is force per unit area, and area is L square. So how much it is? m cx square over L into L square. So this is m cx square over L cube. Okay, so this is the expression for pressure Px for one molecule, है ना? And gas molecules containing n numbers of molecules, है ना? So Px for all molecules जो है आपका how much it is? m c L q m by L q into जो है c x1 square
Cx2 square plus Cxn जो है n is it is containing n numbers of molecule n square. Okay, so this is the pressure for x direction, and you know all gas molecules are exerting pressure all over the world isotropically. Okay, so means for another direction this px equal to py equal to pz. Okay, so this one px py pz, and you can write p equal to 1/3 of px plus py plus pz है ना, सब यूनिफॉर्मली मोशन है ना. नाउ ओके, सो आपका जो है सो अब आपका सो प्रेशर इक्वल टू P equal to now 1/3 of, okay, अच्छा, this one is m over LQ, okay, this and this one of जो है Cx1 square जो है आपका C, and similarly you have to write जो है आपका Px Py and Pz भी आपको इस तरीके से लिखना पड़ेगा है ना. Cx square C y1 square plus c z1 square, and thus it is c जो है xn square c yn square yn square plus c zn square. So ultimately you can write p equal to 1/3 m over LQ. Okay, so this is C RMS स्क्वायर ओवर n. RMS वेलोसिटी आपने लिखे ना, हाउ कैसे आपने लिखे थे, C RMS प्रीवियस क्लास आप एक बार देख लीजिए, C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर प्लस C3 स्क्वायर Cn रूट n एंड दिस है ना. सो अगर इसमें जो है आपका जो है x, ये जो x y z मतलब दिस इज नाउ इसका आपका C1 C2 Cn तक है ना. तो इसको एक स्टेप आपको लिखना है. सो दिस इज योर C1 स्क्वायर एंड दिस इज Cn स्क्वायर n नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल के लिए. नाउ से ये अब ये जो है दिस स्क्वायर इक्वल टू n इंटू CRM स्क्वायर है ना, दिस वाला स्टेप मैंने लिखा नहीं. सो नाउ सो दिस इज द ओवर n. ओके, नाउ अब यहाँ पे आपका जो है आपको कैसे लिखना है यहाँ पे. सो मोलिक्यूल जो है आपका P इक्वल टू 1/3 हाँ, यहाँ पे जो है n CRMS स्क्वायर, दिस वन इज CRMS स्क्वायर इंटू n है ना, दिस इंटू n C m LQ ओवर n and CRMS स्क्वायर. ओके, so this one equal to P equal to 1/3. Okay, see, this is the mass of one molecule and this is the number of molecule in per unit volume m, and this is n, and this mn CRMS square, and this expression you already have seen in your chemistry classes है ना. chemistry classes में ये देखे ना, this आप यहाँ पे दिस इज द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल एंड दिस इज द नंबर ऑफ दिस स्मॉल n इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम, LQ इज द वॉल्यूम भी, इस तरीके से आप लिख सकते हो है ना. और somehow all different types of expression you can write. See here now, so MP equal to one molecule and n numbers of molecule containing this L volume. This you can write, this is total m0 over v, okay, CRMS square. So this is equal to 1/3 where m0 is a total mass, m into total n number of molecule, so 1/3 rho CRMS square, and this expression already you know in different physics.
फिजिक्स प्रॉब्लम में आप देखोगे 1/3 रो सी स्क्वायर, है ना। अब सो ये आपको कहीं से भी कहीं भी डिफरेंट जगह में आपको ऐसा ऐसा मिल जाएगा, ऐसा ऐसा इक्वेशन। ओके, सो नाउ सो दिस इज द प्रेशर इक्वेशन, तो इक्वल टू जो है 1/3 रो सी स्क्वायर, वेयर रो इज इक्वल टू योर m0 ओवर LQ और V। ओके, नाउ फ्रॉम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस जो है आपका प्रेशर इक्वेशन, यू कैन डिराइव द कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर। ओके, so concept of temperature from kinetic theory from pressure, सो आपका जो है काइनेटिक जो है आपका काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस से आपका जो है टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट कैसे आ रहा है। दिस इज द फेमस क्वेश्चन, आपको थ्योरी में ऐसा लिखना है ना। सो कैसे आप ये करोगे, सो टोटल काइनेटिक एनर्जी E इक्वल टू हाफ जो है m n जो है, सो टोटल काइनेटिक एनर्जी आप कैसे लिखोगे, टोटल m जो है C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर प्लस C3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 Cn स्क्वायर। So this is the mass of molecule and total this is the RMS speed. Okay, now so E equal to half. Okay, and this you know this is जो है C RMS square equal to C1 square plus C2 square plus dot dot over n. So this equal to m n C RMS square. So E equal to है ना, so E equal to m ये जो है आपका C RMS square. So this is m into n. m into n is the your mass, है ना। so आपको R C प्रेशर इक्वेशन जो है आपको वहां से देख सकते हो C RMS इक्वल टू, मतलब जो है आपका इस तरीके से भी लिख सकते हो P इक्वल टू 1/3 रो C RMS स्क्वायर। सो 3P बाई रो इक्वल टू C RMS स्क्वायर, है ना। सो यहाँ पे लग सकते हो दिस इज योर मास, सो इक्वल टू हाफ टोटल मास m0 C RMS स्क्वायर इज 3P ओवर रो। सो रो इक्वल टू m0 ओवर v, है ना। m0 ओवर v कर देंगे तो क्या होगा आपका रो इक्वल टू, सो E इक्वल टू 3/2 इंटू PV फॉर वन जो है आप ये है, और 1 मोल गैस के लिए 3/2 RT। सो E इक्वल टू 3/2 RT, ये आपका एक्सप्रेशन है। सो E इज प्रोपोर्शनल टू T। सो व्हेन T tends to 0, so absolute zero temperature, so your kinetic energy also stops. So whenever you putting some heat, so यहाँ पे आपका मान लीजिए ये क्लोज्ड वेसल में आप यहाँ पे हीट दे रहे हो, है ना। सो यहाँ पे you are giving heat, so ये गैस मोलिक्यूल इट विल टेक हीट एंड इट्स हीट ये जो है दिस हीट ये it will increase its kinetic energy and obviously its temperature. Okay, so at absolute zero temperature kinetic energy will be almost zero, but there is a some 0 point energy that I will be explaining a little bit later. Okay, so now so basically total energies, so यहाँ से आप temperature का concept आ रही है ना। So now using your चार्ल्स लॉ जो है, चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, you can prove Boyle's law. So E proportional to जो है PV, है ना। E इक्वल टू जो है यहाँ से आप क्या देख रहे हो, E इक्वल टू
C/2 PV है ना, और E proportional to T also here है ना. So PV proportional to T. For constant temperature, so up where temperature is constant, so T is constant, PV equal to जो है PV proportional to जो है constant. So PV is constant. This is your Boyle's law. Okay. So now PV proportional to, and when the volume is constant, या जो है pressure is constant, then pressure and when temperature and pressure, when temperature and pressure is constant, temperature and pressure is constant, जो है आपका अच्छा, when pressure is constant, so एक किसी भी कंटेनर में आपका जो है यहाँ पे एक प्रेशर कांस्टेंट है. सो इफ यू आर गिविंग आपका जो है टेम्परेचर, देन इट्स वॉल्यूम विल इंक्रीज. सो V proportional to T. So if you are giving temperature to this system, then its volume will increase. So ये आपका चार्ल्स लॉ. So now Avogadro's hypothesis. So you have to prove Avogadro's hypothesis. So at constant temperature and pressure, equal volume of gas contains equal number of molecules. Equal volume of gas contains equal number of molecules. मतलब टेम्परेचर प्रेशर अगर कांस्टेंट है, दो कंटेनर है ना, दिस कंटेनर टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कांस्टेंट. यहाँ पे आपका मान लीजिए CO2 गैस है, इधर ऑक्सीजन गैस है, सेम वॉल्यूम, इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैस, सेम वॉल्यूम में सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रहेंगे. यहाँ पे जितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल रहेंगे यहाँ पे, दिस इज द फेमस एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस. ओके, सो नाउ you have to prove this using half. So pressure equal to half mNc RMS. अच्छा, ये 1/3 है ना, प्रेशर इक्वल टू 1/3 mNc RMS स्क्वायर. छोटा n, दिस इज छोटा n इज योर n over v. छोटा n बड़ा n you should not confuse with. Okay, so now if temperature is constant, so average kinetic energy of this container is constant. So pressure is constant. P1 equal to m1 n1 c1 rm square, and this is P2 equal to m2 n2 c2 rms square. So if pressure is constant, so m1 n1 c1 rms square equal to m2 n2 c rms square. Okay, this one. Now so if both container same temperature, means average kinetic energy of the gas molecules are same. So I can write m1 c1 rms square equal to half m2 c2 rms square. Okay, so m1 c rms square and m2 c rms square is same. ये जो है, so m1 c1 rms square and m2 c rms square is same, as kinetic energy at T is constant. Then you can write n1 equal to n2. So number of molecules पर यूनिट जो पर वॉल्यूम या वॉल्यूम से अगर मल्टीप्लाई करेंगे, सो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है वो दैट मच वॉल्यूम विल बी सेम, वेदर इट इज ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स और कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स. ओके.
So this is the proof of Avogadro's hypothesis. Now one thing, so you know the total kinetic energy that's जो है आपका depends on temperature. Okay, so आपका जो है and using this total जो है half mc1 RMS square. So this is the kinetic energy of this gas. This depends on temperature. So now let's a famous example. You know, in nuclear reactor there is a separation of uranium 235, uranium 238, and you have to separate it, and you have to enrich. Uranium 230 is fissile, मतलब यहाँ से this is it can collide with neutron and it will emit energy, मतलब this is after fission. So you have to enrich मतलब इसका concentration ज़्यादा करना है. So यहाँ जो है आपका यूरेनियम का फ्लोराइड है ना, यूरेनियम 235 का, और यूरेनियम UF6 and U238 F6 and this gas. So there is a diffuser. So that molecules, this is having lesser mass. So that molecules have, it is diffusing more and more. So and it is diffusing 238 is slightly higher molecule. So this कुछ diffusion chamber में आपको रखेंगे तो that molecule can diffuse out more. So, क्योंकि इसका मास बहुत इससे कम है. So इस तरीके से you can segregate it. And later जब न्यूक्लियर रिएक्टर हम पढ़ेंगे उसमें ये सब बात करेंगे, है ना. ठीक है, आज के लिए इतना ही, पढ़ते रहिए.